Hey everybody, welcome Okay. back to my channel Nish Bunny. Today we have with us Shivam, who is currently working as an industrial trainee at Tata Steel. He is going to guide us about how he got his industrial training opportunity and his articleship experience. Hi Shivam, how are you? Hi Nisha, I'm fine, and thank you for inviting me to your channel. Okay, so let's start with some beginner questions. How did you decide कि you have to do CA and how was your articleship journey? Okay, so for deciding CA, like in starting only, I've decided that I am not interested in like science background, Uh, so I choose the commerce background. But at start there was no such decision to do CA only. But after like my 11th and 12th standard completed, so I decided to move with the CA course. And hmm. like after my 12th boards only, I have given CA foundation, and that's how the journey of CA started. ओके सो जब आर्टिकलशिप चूज करनी थी तो व्हाई डिडंट यू गो फॉर अ बिग फोर फर्म मिड साइज फर्म क्यों चूज करा आर्टिकलशिप के लिए? आर्टिकलशिप का मेरा वैसा था कि मुझे चाहिए तो था बिग फोर। आई वॉज प्रेफरिंग बिग फोर स्टैट ऑडिट ओनली, ओके। but I was in Kolkata that time and I had applied in EY and like KPMG, but that time I was not shortlisted as because the like competition in Kolkata is very huge because the number of CA students there are very large, large number. So that time I was not shortlisted for Big Four stat audit and I was getting opportunities in fields like transfer pricing, etc., indirect taxation, and I don't wanted to go there. So I chose to go. I chose over a mid-sized firm where I would get an exposure of like ऑल द a डोमेन्स। mixed exposure of all fields like stat audit and bank audits, tax audit, like then ITRs also, GST. So I chose a mid-sized firm then. ओके सो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि इफ यू गो टू अ मिड साइज फर्म या अगर आई एम ऑल्सो डूइंग माई आर्टिकलशिप फ्रॉम मिड साइज फर्म ओनली बिकॉज आई वांटेड मिक्स Okay. एक्सपोजर। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में दे आर गोइंग टू प्रेफर बिग फॉर पीपल, इज इट ट्रू टू सम एक्सटेंट या मिड साइज वालों को मिलता है अपॉर्चुनिटीज? अपॉर्चुनिटीज आराम से मिलता है इंडस्ट्रियल में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब बिग फोर से ही होना चाहिए। बिग फोर से होता है तो एक थोड़ा सा एज होता है, बट हाँ। ऐसा मिड साइज से भी वो लोग आराम से लेते हैं अगर आपका एक्चुअली में एक्सपोजर अच्छा है। फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग में आपका मिक्स एक्सपोजर रहा है सारे फील्ड में, अगर हम्म। आपका एक्सेल में कमांड अच्छा है एंड ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक ठाक है तो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसा ओके। बिग फोर का टैग ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं होता है। अच्छा तो मतलब अपॉर्चुनिटी सबको मिलता जैसे है बिकॉज आई नॉर्मल हैव थिंग। ऑल्सो सीन पीपल मिड साइज फर्म के अलग अलग अच्छी अच्छी कंपनीज में दे आर गेटिंग इंडस्ट्रियल। ओके। तो यस। व्हाई डिड यू डिसाइड फॉर टू गो फॉर एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आफ्टर 1 year ऑफ यस। आर्टिकलशिप? After 1 year of articleship, I have realized that I have already gained a mixed exposure on each and every field like audit, taxation. I filed ITRs also and like some of the GST returns also, ओके। some income tax proceedings I was involved in. So like I thought that already एक mixed exposure मिल गया है हम्म। and अगर इसी फर्म में सेकेंड ईयर में भी रहे तो सेम थिंग पूरा रिपीट होगा, सेम हाँ। क्लाइंट्स एंड सेम वर्क एंड ऑल सेम एक्सपोजर। तो आई थॉट कि वी शुड ट्राई समथिंग न्यू लाइक इफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अच्छी कंपनी में मिल जाता है, कोई बड़ी कंपनी बड़ा ब्रांड है, अगर रोल अच्छा है तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। तो आई डिसाइड टू ट्राई फॉर इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में व्हेन यू डिसाइडेड व्हेन अ पर्सन डिसाइड्स कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाना है तो हाउ डू यू डिसाइड कि मतलब डोमेन डिसाइड करते हैं या फिर कंपनीज डिसाइड करते हैं या कोई पर्टिकुलर सेक्टर आपको इंटरेस्ट करना होता है तो उसमें आप इंडस्ट्रियल खोलते हो? ओके। डोमेन का एज सच मेरा आई प्रेफर लाइक फाइनेंस डोमेन में कुछ भी एक अच्छा एरिया मिल जाए तो चलेगा। मेन आई वॉज फोकस्ड ऑन द ब्रांड वैल्यू ऑफ द कंपनी, ओके। लाइक द कंपनी अगर अच्छा हुआ तो वर्क एक्सपोजर अच्छा ही रहेगा वहाँ का।
So I got into finance domain of Tata Steel, and my department is costing department. So like here it is, the work exposure is really good. That's nice. So when did you start looking for industrial training? मतलब किस time पे you started applying? I started applying for industrial in like the last month of the first year of my articleship, uh, which I think I was a bit late. Like you should apply uh, at the 11th month of your articleship, I think, like before 1.5 months of completion of your first year. Okay, Because एंड बहुत ज़्यादा पहले से भी अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिक्रूटर्स लाइक लुक फॉर द इमीडिएट joiners. So you can start applying at the 11th month of your articleship or the maybe the last month of your first year. okay, So I had also started applying for at the last month only. okay. तो Yeah. उसके अलावा what platforms did you use? LinkedIn या फिर emails वगैरह किस तरीके से you started applying? I only use most probably I use only LinkedIn only. So because all the many vacancies came on LinkedIn on a daily basis from different cities. I think the LinkedIn is the best platform. The vacancies on ICA portal also. They also like have some of the companies for industrial training. And if you have any other options, you can explore them as well. But I use only Okay, LinkedIn only. okay. So what all companies did you get your offer letter from? मतलब और कहाँ पे you gave interview? I only applied in two companies like ITC Kolkata Okay. and Tata Steel. So at first I had given my interview in ITC also in the month of March, I think. Hmm. That was for accounts domain, and that in that thing I have gone till the manager round. But after that I was not shortlisted, so I was not selected there. Hmm. Then after a month or something, like I got to know about कि एक टाटा स्टील में एक वैकेंसी आया है. So I applied in Tata Steel also because I was getting it in my hometown. My Okay. hometown is also Jamshedpur, and so it was a great opportunity for me. So I like tried for it. I applied in Tata Steel at that time, Hmm. and I got my interview in April, and that's how then I was selected. ओके रफली कितना टाइम लगता है वहां से रिप्लाई आने में एंड इंटरव्यूज और बाकी सारे फॉर्मेलिटीज होने में? Yeah, so like if you get shortlisted for the interview, it यस. can be really fast also, like 2 or 3 days maybe interview हो जाता है. But in companies like ITC, they take 3 to 4 rounds. So that will take time. Like if they are taking more rounds, first they take the preliminary round, then some Excel round, then हम्म. technical round, then manager round, then तो वो सब में थोड़ा टाइम लगता है. बट डिपेंड्स ऑन द कंपनी. लाइक ओके. जब सब जल्दी भी हो जाता है, लाइक कितने कैंडिडेट्स वो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. आईटीसी में तो मेरा काफी टाइम लगा था. ओके. तो जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के जो इंटरव्यू था टाटा स्टील का उसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे? इज इट लाइक एचआर राउंड हुआ फिर टेक्निकल राउंड हुआ मतलब उसके बारे में थोड़ा सा? इसमें वैसा एचआर राउंड वैसा तो कुछ नहीं हुआ था. डायरेक्ट सिर्फ एक ही राउंड हुआ था. डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था सिंस द मैनेजर द सीनियर, देन दे asked about my articleship journey. Then some basic questions were asked from the CV itself, what I have written in the CV. हम्म. Then then another person asked some technical questions like how is revenue recognized based on Index 115. ओके. Uh, then some questions were asked related to Schedule 3. Uh, then some case-based questions they asked like about the what is the treatment of demurrage costs and dispatch earnings into inventory.
Okay. Then they ask some question like, what are the tools we can use in Excel to summarize a large, huge amount of data, Hmm. and what are the tools to like summarize data in Excel and MS Word. Then they ask some general questions like, Okay. will you be able to work late for like in pressure situations and like closing activities? Are you willing to work till 10 p.m., 11 p.m.? And also they said that if you're getting industrial here, you have to work till full 12 months. And अच्छा. like my only 10 months of articleship was remaining, Hmm. but they said that you got selected. बिकॉज ऑफ दैट मेरा टर्म भी डिफर हो गया मेरा सितंबर 26 था ये अभी जनवरी 27 हो जाएगा Okay. So, industrial में अभी या तक, how is your experience going on? What are your learnings? Is it the same work कि एक ही चीज बार बार करवाते रहते हैं या फिर कुछ नया नया भी है? How is it different from the articulture? uh, from the articleship journey it is completely different like here there is no involvement of taxation GST and audit it is completely a new thing and like what our role is to like we have to consolidate all the data of the inventory. Like we receive data from various branches, like Tata Steel has many branches, and we receive the inventory data from each and every branches, and we have to consolidate it together, like for the, and we have to report for the previous month. Like for example, currently I'm in June, so I have to report for the month of May that how much inventory, where is the location, what is the amount, what is the quantity, अच्छा. like how much there is raw material, finished goods, steel, stores, like each and everything. We have to summarize all the data and report it to the senior management within a given deadline. So like these are the thing, and I was also involved in some of the work in the post audit, and but I it is my costing department. So like we have to do these things, and after that we perform analytics based on previous months, based on budget. Like Okay. so, yeah, these are the things I'm currently doing, and yes, I think in industrial training at a point of time it becomes monotonous because at each month we have to do the same thing and again. So exposure wise, you will not get that exposure, I think, like the articleship. But Hmm. yeah, it has its own pros and cons. Like here, the volume of data is so large, and like you will be really good at, I think, handling Excel files, and like you'll got to know about SAP most probably in all the companies. So yeah, it has its pros and cons, and till now it has been a great experience. Let's see So, forward. how is your studies also going side by side? मतलब articleship के साथ it was ज़्यादा easy आप पढ़ पाते थे या फिर industrial के साथ Mhm. is better? मतलब flexibility कहाँ है पढ़ाई की? Is that कि industrial में you don't get enough time to study, people say? I think in my case, आर्टिकलशिप में ज़्यादा प्रेशर होता था क्योंकि at times of ITRs and tax audit Hmm. and SAT audit, there was a lot of pressure in the office, and we have to work till late also and work from home also. And but here I think best thing about industrial is you get Saturdays off. Oh, So okay. so you get 2 days off in a week, and also here the working hours is also good. Like it is 9 to 6 or maximum it stretches to 7. So work pressure is, I think, in my case it is less in industrial. It was more in articleship, and like yeah, sometimes when comes during the weekdays, you have to manage it during the weekend. Like you have to clear the backlog during the Saturdays and Sundays. Okay. Yeah. So अगर if someone asks from you कि industrial training के लिए जाना चाहिए या नहीं, provided कि you are working in a mid-sized firm, हर तरीके का exposure है,
एंड यू ऑल्सो वांट कि मतलब सेकंड ईयर में एज क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर आर्टिकल करके छोड़ दोगे तो फिर जो सेकंड ईयर में जो सीनियर्स कर रहे होते हैं वो को नहीं मिलता सीनियर पोजीशन। Yeah. और प्लस एज यू टोल्ड की Uh, और अटेम्प्ट आल्सो गॉट डिफर्ड बाय 2 मंथ्स उसको yes. बढ़ाने के चक्कर में। तो इज इट लाइक एडवाइजेबल कि जाना ही चाहिए इंडस्ट्री पे सिर्फ कंपल्सरीली की मतलब नहीं हो रहा है अटेम्प्ट भी डिफर हो रहा है Hmm. और सीखना भी है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इंडस्ट्रियल मेरे हिसाब से तो अगर एक अच्छा कंपनी अच्छा ब्रांड वैल्यू मिल रहा है तो मेरे हिसाब से चूज कर लेना चाहिए। अगर डोमेन भी डिसेंट है, कंपनी का ब्रांड वैल्यू अच्छा है, वर्क एक्सपोजर, अगर आर्टिकलशिप में ठीक ठाक काम कर लिया है तुमने, और ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल के स्टाइपेंड भी काफी अच्छा होता है, देन यू विल गेट योर सैटरडेज ऑफ, then like work you'll learn a different domain, like totally different exposure of corporate finance. ओके। So I would yes advise like industrial अगर अच्छा कंपनी मिल रहा है तो ले लेना चाहिए without any thought. ओके Yes. एंड व्हाट अबाउट जिनके प्रिंसिपल्स मना कर देते हैं योर प्रिंसिपल डिडंट हैव अ प्रॉब्लम विद यू गोइंग फॉर एन इंडस्ट्रियल मतलब कुछ लोग तो साइन करने से मना कर देते हैं। Principal, yeah, principal at first uh, like said that you will not be getting transfer and all, but then you have to like plan it from 2 3 months before only, that ओके। you give a proper notice period to your principal also, so that he also brings another article in, to अच्छा। replace you. So like plan it beforehand only, like 2 3 months if you want to do industrial, so that there is not a problem with your principals. ओके सो आफ्टर Yes, इंडस्ट्रियल यू विल हैव अ लीव राइट टू स्टडी फॉर योर एग्जाम्स? yes, yes. Like in the new scheme, so everyone is having compulsory 6 months study leave. ओके सो व्हाट अबाउट द लीव्स ड्यूरिंग दैट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पीरियड कोई ऐसे छुट्टी ले सकते हैं या फिर डिफाइंड है कि नहीं ले सकते या तो ले सकते हैं? व्हाट इज द सिस्टम? During the industrial training period, हाँ। during the industrial training, it is our like 12 12 leaves a year, yeah, right. We are allowed for 12 leaves every year. So industrial training also you are allowed for 12 leaves. दैट्स नाइस। So these were more or less जो questions cover करने थे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। इफ यू कुड मेंशन एक दो प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिली हो रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वैकेंसीज से रिलेटेड पोस्ट से रिलेटेड। सबसे ज़्यादा हेल्प तो मुझे लिंक्डइन से ही मिली है, क्योंकि वहाँ बहुत लाइक डेली बेसिस पे आज की डेट में बहुत वैकेंसीज आ रहे हैं, जहाँ पे लिंक्डइन में यू गॉट टू नो अबाउट ईच एंड एवरी कंपनी। अच्छी अच्छी कंपनी भी आती है, अमेजोन, लाइक जेप्टो, बार्कलेज, there are a number of companies which are offering industrial training nowadays. So like पहले इतना नहीं था इंडस्ट्रियल का, बट आज की डेट में बहुत अपॉर्चुनिटीज है इंडस्ट्रियल के लिए, एंड लाइक वेरियस डोमेन्स। तो वन लुकिंग फॉर इट कैन ओके इजीली आई थिंक गेट इन with the help of LinkedIn. सो लिंक्डइन पे बेसिकली जैसे वैकेंसी आएगा तो यू जस्ट यूज टू अप्लाई मतलब वो भी कुछ लोग कहते हैं ना कि यू नीड टू मैसेज पीपल कोल्ड मेलिंग करना रेफरेंस करना तो वो सब में डिड यू गेट इन्वॉल्व या फिर जो वैकेंसी आती थी सिर्फ अप्लाई कर देते थे फॉर्म वॉर्म भर के एंड फिर वेट कर देते थे रिप्लाई का? नहीं, थोड़ा अगर आपको लाइक सीरियसली अप्लाई करना है तो थोड़ा अच्छे से मैसेज वगैरह करना पड़ेगा, ताकि मोस्ट ऑफ द पीपल वरना दे डोंट रिप्लाई। तो आप जैसे ही वैकेंसी आता है, फर्स्ट यू कनेक्ट विद देम एंड यू कैन टॉक देम at start a little bit, and then you can start applying. So it would fetch a more better response. थैंक यू सो मच शिवम। दिस सेशन वाज लाइक वेरी इंटरैक्टिव। आई थिंक बीच बीच में नेटवर्क एरर्स हो गए तो आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ एडिटिंग ऑन दैट पार्ट बट आई Yeah, वाज yeah. very happy to have you here and the way you told about your industrial training and everything was just super nice. Thank you so much. Thank you, Nishad. Thank you for inviting me to your podcast. It was a great time. Thank you so much.